Hello student, today we have to solve some questions regarding topic knowing our numbers. First question, how many four digit numbers are there? Write the smallest and the greatest number of 7 digit from the digit 6071925. How many 7 digits number are there in all? Write the smallest 7-digit number having 4 different digits. Write the greatest 6-digit number having 5 different digits. So we start from question number. How many 4 digits number are there? For getting the all 4 digits number, we have take the smallest 3 digits number. The smallest 3 digits number is equal to 100. 100 is the smallest 3-digit number. Now the smallest 5 digits number. Not 4. The smallest 4 digits number is equal to 1000. And the smallest 5 digits number is equal to 10,000. This is 5,000 and this is 4,000. Below this, if we subtract, यदि हम इसमें से एक भी नंबर जैसे 10,000 है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,999. This is the largest digit of 4 digits. And when we subtract 1,000 minus 1, we get 999. This is the 3 digits. So, if you want to know all the numbers of any digits, then you have to find if in question 4 digits, so you have to get the 4 digits smallest number and the 5 digits smallest number, and you have to subtract from 1 to another. Now are the numbers of 4 digit. Digit is equal to 10,000 minus 1,000. 0, 0, 0. When 10 out from 1, 9. 9,000. 9,000 will be all the 4 digits number are there. So we get 9,000. 4 digits number are 9,000. So 4 digits number. How many digits number are there? 4 digits. So 9,000. Any number that you want to write, in 4 digits they are 9,000. When you start from 1,000, 1,001, 1,002, in this way, any kinds of number that can be written in 4 digits, they are in numbers of
9000. So for getting the numbers of 4 digits or 5 digits or 6 digits, first of all you have to find the smallest of required digit and the smallest of more than one required smallest digit. पर किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट की अगर कितनी भी संख्याएं हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उतने ही डिजिट की स्मॉलेस्ट लेते हैं और उससे एक डिजिट बढ़, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो एक डिजिट और बढ़, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आता है उतने ही नंबर्स 4 डिजिट में लिखी जा सकती हैं, उससे एक भी ज्यादा है। ये हमने देखा कि 4 डिजिट्स का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1000 है और 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10000 है। तो हमने 10,000 में से 1000 को आउट किया तो हमने 9000, तो टोटल जो है 9000 नंबर लिखी जा सकती है 4 डिजिट्स। नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Second, write the smallest and greatest number of 7 digits from the digits. Using these digits, you have to write the smallest number and the greatest number. For smallest number, you have to arrange the number from smallest to greatest. You have to write in ascending order. But zero should not. We have not to start from 0. And the greatest number, you have to arrange the numbers in descending order. So the digits are 6, 0, 7, 1, 9, 2, 5. So using these digits you have to find the smallest number. The smallest number is equal to smallest number. First of all we have to start from smallest number but greater than 0. 0 को छोड़ने के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1. 1 then 0 0 after 0 2 after 2 5 then 6 then 7 then 9. 1 2 3 4 5 6 7 100 1 tens 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 10,25,679. Using these digits, this is the smallest number. इस संख्याओं का यूज करके हम यही स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते, इससे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं और जितनी डिजिट बचती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। पहले 1 लिखा तो 0 से लेकर 0 2 5 6 7 and 9. This way we get the smallest number. Largest number is equal to, you have to arrange this into descending order. 9 7 6 5 2 1 0. This is the largest number. In smallest number, if 0, then you have 0. You have to write after the smallest number, except 0. Then you start 0 and we arrange in ascending order. But in largest number, you have to arrange the digits in descending order. Then you will get the largest number by using the given digits. So 97,65,210 is the smallest number and 10,25,679 is
is the smallest number by using the 6071925 digits. So we start to solve the question number 3rd. Question number 3. How many 7 digits number are there in all? Here 7 digits. How many numbers are there? They are there of 7 digits. 7 digits की जितनी भी संख्याएं बनती हैं, what is the total number of those? उन संख्याओं पर संख्या कितनी है जिसमें 7 digits? So we have to write the smallest number. The smallest number of 7 digits. 7 digits is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. But 10 lakh is the smallest 7 digits number. 7 digits. The smallest number of 7 digits. Now the smallest number of 8 digits is equal to 1, 10, 100, 1000, 10,000. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits. Now the total number of 7 digits. So the total number of 7 digits equal to, you have to subtract this smallest number of 7 digits from the smallest number of 8 digits. 1, here minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Subtracting 0, 0, 0, 0, 0, 0. Out 1 from 10, 9. 100, 1000, 10,000, 90. 90 lakh. So the total number of 7 digits will be 90 lakhs. 1, 600, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 90 lakh will be the 7 digit की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 90 lakhs. So let's we start to solve the question number 4. Question number 4. Solution. Write the smallest 7 digits number having 4 different digits. Write the smallest 7 digits number using the digits. You have to write the 7 smallest digit number having 4 different digits. If we are to write the smallest digit and the 4 different digits, अब वो जो नंबर लिखेंगे 7 डिजिट की उसमें 4 डिजिट ही होने चाहिए और वो डिफरेंट होने चाहिए. 4 डिजिट 4 नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए 7 डिजिट. वही 5 डिजिट 5 नंबर नहीं ले सकते. 4 डिफरेंट डिजिट जो डिजिट लेंगे वो 4 लेंगे और वो डिफरेंट रहेंगे. यूजिंग देम यू हैव टू राइट द 7. सो स्मॉलेस्ट है इसलिए हम 0, 1, 2, 3 या 3, 0, 1, 2. 4 डिफरेंट डिजिट्स. हमें 4 डिफरेंट डिजिट लेना है. 0, 1, 2, 3. So the digit
the digit, the four different digits are 0, 1, 2, 3. Here you see that there are four different digits. Using these you have to write the smallest 7. So the smallest 7 digit number is equal to, first of all we have to write 1. Now we have to write 7 digit 1, 6 digit remain. So 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here using the 0, 1, 2, 3 we wrote the smallest number of 7 digit using 4 different digits. When इन smallest छोटी संख्या में हमें 0 से लेना चाहिए, 0 से छोटी संख्या 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट नंबर हो गए स्मॉलेस्ट के लिए और ये हमने लिख दिया। 1 को रखेंगे और 2, 3 को देखते हैं कहाँ रहेंगे और जितने बीच बचते उतने 0 रख देते हैं। इन दिस वे we will be able to write the 7 digits numbers and any required digits number by using the different digits. This is your answer. 10 lakh 23. Now we solve the question number 5. Question number 5. Write the greatest 6-digit number having 5 different digits. So we have to write the 6-digit number having 5 different digits. Greatest number, so we start from 9. The 4 different digits are 9, 8, 7, 6. Here there are 4 different digits. Here you have to write the greatest. So we start from greatest 9, 8, 7, 6. By using these 4 digits, we have to write the greatest 6-digit number. So the greatest 6-digit number is equal to, we have to arrange these into ascending order, descending order. 9, 2, 3, 4, 5, 3 to 5, 1, 9, 8, 7, 6. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the greatest number of 6 digits using the 4 different digits. So जब हम greatest number लिखना चाहें और 4 digit हमने लिया डिफरेंट, तो हमें greatest number से लेना चाहिए 9, 8, 7, 6. हमने ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि 9 नंबर तक ही ग्रेटेस्ट होते हैं 1 to 9, तो 9 से स्टार्ट करते हैं 9, 8, 7, 6 यूज करेंगे 9 लिखेंगे, उसके बाद लेते हैं 3 डिजिट जो लास्ट में ले लेंगे 3, 1, 4, 3 ये हो गया 3 और कितने बचे 4, तो 4, 9, 3 ये ले लेगा 3 और 6 डिजिट का लिखना है तो 3 ये कैप्चर कर लेगा 9 को 3 right left से 1, 2, 3, 8, 7, 6. This is the
largest number using 9876. 9,99,876. So these are the solution of these questions, and I think all of you have understood these questions clearly, and all of you can solve this types of questions from your exercise book. So it is sufficient for today, and we see in next video with next topic and next questions, and thanks for today.